In the name of Allah, the Rahman, the Rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. Topic for today's lecture discussion is behaviorism versus mentalism. So, in today's class, we will be learning the key differences between behaviorism and mentalism, as we have defined that what is behaviorism and what is mentalism in our previous lectures. So, today's class is the continuation of the same lecture, okay? Like we have two linguists or psycholinguists, okay, B.F. Skinner and Noam Chomsky. Firstly, dear students, behaviorist theory. Behaviorism is the concept or it's the belief, and that belief proposed behaviorist theory, okay? In 1957, a piece of literature appeared that would come to affect how we view language, how we are learning language, how we are looking at language, human behavior, okay? Language and human behavior and language learning. Like there are two things, dear students, human behavior and language learning. How we are like considering these two things, how we are making meaning of these two things, human behavior and language learning. Like for example, is there any difference between human behavior and language learning, or these are two similar things? In behaviorism, we are basically discussing these things, okay? Behavior, like we have generally, we have behavior, and we have also behavior for language, and they are not making distinction, they are not differentiating these things. They are considering, like behaviorists, they are considering, or B.F. Skinner is of the opinion that language learning, a language behavior is similar to other behaviors of human beings. B.F. Skinner's verbal behavior, it's a work he did in 1957, applied a functional approach to analyze language behavior in terms of the responses that language gains in social environment, like in social interaction, how language is learned, how language is used, okay, how language is acquired, like in how language acquisition occurs in social circumstances and in social life. Like he gave the concept of reward in punishment for behavior, like for good behavior, for liked behavior, there is a reward, and for bad behavior or for unlike behavior, okay, if someone is doing, if a child is doing something wrong, so that will very behavior will be considered bad behavior, and there is punishment for that behavior, and there is reward for good behavior. Like B.F. Skinner is saying that are all his fellows, his colleagues, they are of the opinion that language learning is similar to habit formation, or it is a habit formation, okay? Language comes through imitation or association or habit formation. It is an activity which comes through trial and error analysis, okay, or trial and error exercises. Language is learned. Now, dear students, on the other hand, we have innate theory or nativist theory. Like the first one is behaviorist theory, okay, and the second one is innate theory or nativist theory, okay. This theory is proposed. This theory proposes that children have innate or an inborn capacity or faculty for language acquisition that biologically determined, okay, like something inner or something God gifted is present in human mind or children mind, which is responsible for language learning, okay. This innate capacity
or faculty is responsible for language acquisition in language learning. Uh, Noam Chomsky has given this concept, okay, in innate theory or mentalist theory. He is saying that all languages share common principles, such as all languages have nouns, yes, all languages have verbs, all languages have tenses, or the concept of time and the concept of number. So there is a common feature, a common principle, which is universal grammar. He presented the concept of universal grammar, UG, okay, dear students. And there is also a critical period for language acquisition. So in these two theories, basically, dear students, like behaviorism focuses on the outer world, okay, the measurable entities are taken into account in behaviorism, while on the other hand, in innate theory or mentalism or mentalists approach, there is the concept of universal grammar, there is the concept of thought processes, cognitivism, cognition, okay, universal grammar, and critical period for language acquisition. Now, what are the key differences, dear students? We have discussed these theories in detail. If you have any problem, you should watch the previous lecture for more details. Like, dear students, Skinner says, language learning is a matter of trial and error method, okay? Language comes through trial and error method, error analysis or error making. Now, Chomsky says a child gradually makes sense of what he hears by processing it according to a set of built in mental rules. Like, there are mental rules or mental capacity, okay? चाइल्ड जो कुछ सुनता है, जो कुछ इन्वायरमेंट से गेन करता है, वो रेफर होता है, वो रेफर करता है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को जो ऑलरेडी उसके माइंड में डेवलप है उसके साथ मैच करता है, ठीक है, प्रॉपर प्लेस में उसको प्लेस किया जाता है, ओके। ऑन द अदर हैंड, स्किनर कहते हैं कि नहीं, ये ट्रायल लैंग्वेज हम जब सीखते हैं तो ट्रायल एंड एरर मेथड से सीख सकते हैं. Another difference, language is learned through imitation of a haphazard set of sounds. Disorder, like बेतरतीब साउंड्स आते हैं, ठीक है. चाइल्ड सुनता है साउंड्स को, आवाज़ों को, मुख्तलिफ वर्ड्स को, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को, और हैज़र्ड मैनर में, डिसऑर्डरली मैनर में वो सीखता है लैंग्वेज को. लेकिन चॉम्स्की कहते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं है. प्रॉपर प्लेस में, प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर ऑर्डर में, ठीक है, इंफॉर्मेशन चाइल्ड गेन करता है, ऑर्डर देता है. जिस तरह के डियर स्टूडेंट हमने एग्जांपल लिया था एक बिल्डिंग का, ठीक है, कि बिल्डिंग हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट, मतलब उसमें जो कंपोनेंट्स लगाते हैं प्रॉपर प्लेस पर लगाते हैं, ठीक है. तैयार तो हम बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम ईंट्स लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, अदर कंपोनेंट्स अपने अपने प्रोसेस पे अपने अपने तरतीब से लगाते हैं, ठीक है. सो इस तरह एक बिल्डिंग को हम, मतलब एनालॉजी का जिक्र हमने किया था कि लिंग्विस्ट्स एक एनालॉजी देते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटलिज्म. सो हैज़र्डली नहीं सीख सकते. यस डियर स्टूडेंट, बिहेवियरिज्म का अनदर स्टांस है कि लैंग्वेज इज लर्नड बाय कांस्टेंट पेरेंटल री इन्फोर्समेंट. जी, कहते हैं कि लैंग्वेज चाइल्ड कैसे सीखता है, जब बच्चे को पेरेंट्स क्या करते हैं, री इन्फोर्स करते हैं, उनको रिवार्ड अब देते हैं, ठीक है. वो बिबलिंग शुरू करता है, साउंड्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है, मम कहते हैं, अम्मा कहते हैं, ठीक है. सो उसको इनकरेज किया जाता है और उसी तरह वो लैंग्वेज को गेन करता है, लैंग्वेज को सीखना शुरू करता है, एक्विजिशन के प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हो जाता है. लेकिन मेंटलिज्म या चॉम्स्की कहते हैं कि नहीं, देयर इज एन एरिया ऑफ ब्रेन सेट असाइड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि नहीं, एक कैपेसिटी के साथ वो पैदा हुआ है, वो अगर आप उसको रीइंफोर्स न भी करें, उसको मोटिवेट न भी करें. सॉरी डियर स्टूडेंट्स, कॉल फॉर प्रेयर वाज गोइंग ऑन. सो डियर स्टूडेंट्स,
there is an area for which is responsible for language learning. Okay, a particular area is there in our mind, in a child mind, inborn capacity उसको आप कह सकते हैं कि which is responsible for language learning. other skills का ताल्लुक उस एरिया के साथ नहीं है, just language का ताल्लुक है, ठीक है. And Chomsky is of the opinion that that area plays an important role in language acquisition, cognition or cognitive framework. Okay, this concept is given by Noam Chomsky कि there is cognition, mental thought processes जिसके साथ हम पैदा होते हैं, ठीक है, which is called a mental framework or cognitive framework. Okay, and there is language acquisition device. Yes, this is a capacity, we can say this is an innate capacity or an inborn capacity. Inborn mechanism is there for language learning, and these things are like lacking in the concept of behaviorism. So like another difference between behaviorism and mentalism, a child develops his language by means of stimulus, response, positive reinforcement, repetition, and new behavior is developed, which is language learning. Okay, a child develops his own mental grammar by means of his innate capacity. Yes, वो मेंटल ग्रामर को खुद ही डेवलप करता है क्योंकि उसके साथ कैपेसिटी है कि वो डेवलप कर सके, ठीक है. और यहाँ पर क्या होता है कि स्टिमुलस रिस्पांस, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स एंड रिपीटिशन से लैंग्वेज को किया जाता है, एक लर्न किया जाता है. अच्छा, लैंग्वेज इज ऑब्जर्वेबल फिनोमेना. यस, लैंग्वेज इज ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन. लाइक स्टिमुलस आप देते हैं, रिस्पांस आप देते हैं, ठीक है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड mentalism says language is a mental and cognitive phenomenon. Okay, like there is no concern of measurable or observable activities. It is totally cognitive phenomenon or mental phenomena. Language learning is similar to the learning of other skills such as driving, cooking, riding, etc. Yes, there is a strong criticism or behaviorism by mentalists. Like language learning is different than other skills of learning. Okay, that's why there is special capacity, special area in our brain for language learning. ड्राइविंग के लिए जो एरिया हम यूज़ करते हैं या पेंटिंग के लिए जो एरिया हम यूज़ करते हैं ब्रेन में, which is different from the area of language learning. Okay, a specialized area भी है and it is a special skill. Okay, it is not a common skill like driving, cooking, riding, etc. Human beings is similar to animals communicate signals. Yes, यहाँ पर यह है कि बिहेवियरिज्म में B.F. स्किनर ने जो रिसर्च कंडक्ट किया है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं, which is on rates, okay, or on animals. He conducted research or his activities or his experiments. Okay, and that's why behaviorism is criticized by mentalism, that animals' behaviors are different from the behavior of human beings. Okay, we can't rely on the experiments which are conducted on animals, okay, for the learning of human language, because language is unique tool in the hands of human beings. Yes, and that very tool that very tool makes humans human. Dear students, that language makes humans human. Okay, it is a unique entity in the hands of human beings, or it is a unique gift given to human beings. Okay, so हम उन पे क्यों रिसर्च करें या एक्सपेरिमेंट करें जिनके लिए लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, जो लैंग्वेज के लर्निंग की कैपेसिटी नहीं रखते, हम उसको कैसे सिमिलर कर सकते हैं
ह्यूमन के साथ या ह्यूमन लैंग्वेज के साथ, ठीक है। L1 is ignored, ओके। कंपेरेटिवली L1 को फर्स्ट लैंग्वेज को इग्नोर किया गया है, ठीक है। यहाँ नाम चॉम्स्की कहते हैं कि नाम चॉम्स्की का फोकस है किस पर, L1 एंड L2 लर्निंग दोनों पर है, या L1 L2 एक्विजिशन दोनों पर है, ठीक है। वो कहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग और एक्विजिशन ऑफ L1 and L2, or it is similar, second language learning is similar to learning of first language. We can say that we are not learning another language, but we are making another layer, okay, another shade in our first language, or we can modify our first language with the help of like the other items we are receiving. मेंटलिज्म का ये स्टांस है कि हम दूसरा लैंग्वेज नहीं सीखते, हम फर्स्ट लैंग्वेज जो जो इन केस ऑफ अस पश्तो है या हिंदको है या उर्दू है, ठीक है, उसमें हम एडिशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। नया लैंग्वेज इंग्लिश और पर्शियन या अरेबिक जो हम सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक कैपेसिटी के साथ डेवलप हुई है, यूनिवर्सल ग्रामर हमने गॉट किया है, गेन किया है, उसकी बेस पे हम हर लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मतलब कोई तजाद नहीं है L2 L1 लर्निंग में, लेकिन उन्होंने जस्ट उसको डिस्कस किया है, L2 के लर्निंग पे फोकस है, L1 को इग्नोर किया है। L1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ L1 वी आर लर्निंग L2। इफ देयर इज नो L1, इफ L1 इज मिसिंग, ओके, अगर क्रिटिकल पीरियड में क्रिटिकल जो हाइपोथेसिस है, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस है, उसमें अगर कोई शख्स लैंग्वेज को लर्न न करे ना, या एक्वायर न करे, कुछ 6 ईयर से 12 ईयर्स तक है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड, क्रिटिकल पीरियड का जो टाइम पीरियड है विच इज़ फ्राम 6 ईयर्स टू 12 ईयर रफली, अगर इसमें कोई मतलब लैंग्वेज को लर्न न करे या एक्वायर न करे, will be unable to learn a language. Yes, there will be no language for him or her. So it is very important. First language is very important, okay, for the sake of other language learning or acquisition. Dear student, activity है आप लोगों के लिए, home task है, write a detailed note on the following: universal grammar, yes, given by नाम चॉम्स्की, इसको आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। ट्रेडिशनल ग्रामर के साथ क्या, ट्रेडिशनल ग्रामर and universal grammar, what are the differences, we can say, you can differentiate between the two. Cognitive theory of learning, of language learning, like we have discussed the behaviorist theory of language learning and mentalist theory of language learning. Likewise we have cognitive theory of language learning. आप इस पे फोकस करें, इस पे टास्क ये नोट तैयार करें, ठीक है। सोशल इंटरेक्शनिस्ट theory of language learning, these are also the similar theory of language learning. Any question you can ask if you have any question in comments. Thanks for watching. Good luck. Good wishes. Assalamu alaikum.